AWS my account, my personal account, and after that we will try to get the things in the CLI facility. But before that, let me download the AWS CLI. So from the internet, you can download the AWS CLI facility. Any one of you who actually want to give the demo on and be a part of the kind of demonstration that I'll be showing, कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ एक डाउनलोड कर सकता है. जैसे लास्ट टाइम पे हमने कल ध्रुव ने करा था, आई थिंक अनिकेत को भी मैंने एक्सेस दिया था. अगर आप भी चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है. आई विल प्रोवाइड दी एक्सेस, और उस CLI फैसिलिटी को आप अपने सिस्टम पे भी यूज कर पाएंगे विद सम सर्टेन सेट ऑफ कमांड. तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. सो इफ एनीवन वांट टू be a part of the today's demonstration, then आप मुझे chat box में मैसेज भेज दें. So whenever I click on the Amazon AWS CLI facility, I open this particular page, है ना. और यहाँ पर आप देख सकते हो the basic CLI interface. It looks like the getting started if you want to know more about that, and the CLI reference, GitHub project and community forum. But before that, we are actually going to download the software. So if I'm using the Windows system, I need to download from this particular section. If I'm using macOS, then it should be downloaded from this particular link. And for the Linux, you can download the installer from this particular site, right? So I'm using Windows. I'm going to download this in a Windows 64-bit installer. Basically, it is a CLI, AWS CLI version 2 .msi, that is Microsoft installer file is being downloaded. That is having 30.5. सर ये सबने साथ में करना है या कोई एक ही, मतलब नहीं, सबको नहीं करना है. अगर कोई चाहता है कि हाँ वो मेरे साथ, जैसे कल हमने डेमो देखे थे ना अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, अनिकेत के साथ देखा था, ध्रुव के साथ देखा था. तो इफ एनीबॉडी टुडे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, देन वो डाउनलोड कर ले. प्रेफरेबली जिसके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप से लॉगिन हो वो, प्लस उसके पास लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, ठीक है. तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो कौन डाउनलोड कर रहा है, फिर मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, और कुछ चीज मैं अपने साथ साथ आपके सिस्टम पे भी पैरेलली रन करा के देखूंगा, ठीक है. So if anyone, all right, so my file is downloaded. Just click on this particular file, and there I need to click on next to install the CLI. I need to check it in yes. It won't take more than 2 minutes, I think. Done. So this completely installed the AWS CLI. And if I want to check whether it is installed or not, I need to go to the start and type in CMD. There, if I type AWS, then you can see that I need to use other commands also. So if I want to see the version, then I can choose this AWS -- version, and you can say that AWS CLI is installed in my system, right? So the very next thing that I can do with this AWS CLI facility is, as a kind of demo in this particular lab, is basically, let's check what is the AWS CLI says in this particular page. AWS shell, and
if we want to use, then we can click on AWS command line interface user guide. So just click on this command line interface user guide, and there you can use several commands, but you need to do certain things before going to use this particular page. Let me get back to this once again. Open कर लेते हैं इसको दूसरे website, दूसरे web page पे, ठीक है? And then you can see that some of the commands like AWS EC2 describe instance को describe करने के लिए we need to put this particular command. And if we want to start the instance, then we can use AWS EC2 start instances, and with the instance ID, you need to type the instance ID. And if you want to use the simple notification services, and if you want to publish a message, then obviously you can use SNS. And with this ARN, whatever source you actually going to use, and you type in message that says script failure. So you will be notified with the message. If you want to use simple queue services, then also you can use the simple, SQS receive message thing. So if you want to know more about the AWS help, and if you want to ask the help, seek the help from the AWS, then you can type in AWS help. Or for auto scaling for Amazon S3 buckets, you can have a number of commands. Any particular type of help if you need, then you can obviously do it on Google search. But before going ahead, we actually need to configure. So for the configuration, we basically need to, suppose, let me copy this particular command and type in this CMD, and what I will get, I'll get an error occurred when calling the describe instance operation. So AWS was not able to validate the provided access credentials. So basically I need to, configure the user so that I'll be able to use this command prompt to my Amazon Management Console, right? So for that, let me log in to my Amazon account, and I am logging in with the root user, although I'm not supposed to log in, but just for the demo purpose, I'm going to log in with my root user account, right? So now I'm logged in to my account through Amazon Management Console. And after that, I need to go to the IAM. And there, I need to go to the users. Yesterday, I think we have created several users. The first is April 5 Pankaj, and other Dhruv, and in the name of Aniket also, right? So let me create another user, add users. Okay. Or let's say I'm creating a user Yadvinder, right? So I'm creating a username Yadvinder. Then I want to associate its password. So I need to go to the custom password section and choose any password of my choice. I choose as Amazon @123. And I actually want to user to create a new password at sign in. So I allowed this particular password reset permission and go to the next permission. If I want to attach any existing policy, then I can attach it. Otherwise, I can go to the next tag option. I am not attaching any policy to this particular user, right? Just create user. So जैसे मैं इसको create करूँगा, you can see that we have an option to download the CSV file, and there you can go and log in with this particular link. So I am actually not going to open it at my system. I will be opening it under the cognito window. ठीक है? क्योंकि अगर मैं वहां पर लॉगिन करूंगा तो मेरा मेन अकाउंट से लॉग आउट हो जाएगा. And I choosing the Yadvinder, and password is Amazon @123. And I need to modify the password.
So confirm the password change. So I'm logged in with the username that is Yadvinder. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक यादविंदर नाम से यूजर बना लिया है and I am logged in to my account, my own account using the Yadvinder IAM role. ठीक, now you need to click on services and then you can directly search as IAM. यहाँ पर अगर मैं IAM पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका एक्सेस डिनाइड आएगा because I have not provided any permission. So first let me provide the permission to this particular account. मैं इसको परमिशन अलाउ कर देता हूँ और परमिशन अलाउ करने के लिए आपको प्रोसेस मैंने कल बताया था. जस्ट एज अ रिकॉल आई कैन once again create or attach the policies associated with this. So if I want to add the permissions, then you can see that only one permission is allowed for this particular user. If I go to add permissions and I click on attach existing policies directly, I can create another policy, but for the time being, I am attaching the IAM full access. ठीक है, so IAM full access मैं इसको attach कर रहा हूँ, add permissions, and there we go. It is going to be attached. Yeah, it is attached now. ठीक है, so if I log in to this particular page now, then I'll be able to see the dashboard that says 2 users are connected. And you can see the last activity, that is it is created 2 minutes ago. The password change is done at 1 minute ago, right? So I just click on the Yadvinder once again. And when I click on this, I need to actually, you do not have the permission required to perform the operation. You ask administrator to add permissions. ठीक है, so यहाँ पर बहुत सारे policies permission नहीं है, permission boundary is not set. Actually it is showing a kind of warning or error signal. So let's take it like that. And after that, you can see several tabs are available, that groups, permissions, tags, security credentials, and access advisors. So whatever thing I actually want to do with this particular account is, let me show you once, then we'll tell you what we are going to do. We are actually, yeah, this one is the thing. Oh, sorry, this is the page. And if we actually want to install the latest version, then after the installation, we need to configure the CLI. So for that, we actually need to search the AWS CLI configure. ठीक है, कैसे configure करते हैं उसके steps आ जाएंगे. So you can see that there is an official document available on the Amazon website, that is aws.amazon.com, and you can see that configuring the AWS CLI. So just click on the link. There you might find what is the process of configuring the CLI. So let me go to the page, and it says this page contains several topics, I need to click on whatever should be the best for me to the configuration. It says configuration basics and the configuration and credential file settings. So let me click on the configuration and credential file settings. So I have landed on the configuration and credential file settings page, and there you can see that we can actually create the configuration settings according to the user profile using this particular page. So if I type in AWS config, let me see, yeah, AWS configure. Okay, so if I type in the CMD AWS configure, so with this particular thing, you can see that there is an access key ID that is associated with the CLI, and it is being hidden. Okay, if I want to change, I can change it here. Why this is saying the AWS access key ID is already installed? Because I actually have provided a key in the morning batch. So this is already inbuilt, or my CLI is already associated with, even though I have installed
reinstalled it, but in the memory, in the CLI, this particular CLI is linked with this particular ID. Now, what I actually want is, because I have created a new user in the name of Yadvinder, so I actually want to associate this particular CLI with the IAM user name of Yadvinder only. Okay, so I need to add the configuration settings of Yadvinder IAM, right? So for that, I need to go back to the Yadvinder profile. And there you can see we have groups, we have tags, we have security credentials, and we have access advisors in that particular tabs available on this particular IAM user. Now, what we need to do is, if we are going to configure the Amazon CLI, then you need to provide AWS access key ID. You need to provide the AWS secret access key for the particular user. You need to choose any particular region in which we actually want to use the services that we are going to deploy on AWS, and you can also choose what is the default output format for this particular CLI. So let me check what is the okay. So here we can actually upload the configuration using import. We can import the CSV file, because credentials.csv we have downloaded in the name of Yadvinder, but I'm not going to do this particular configuration with this command prompt directly. Let me configure it by myself. Okay, so let me do a thing that from where actually we can get the key, the access key ID and secret access key. So on this particular page, I think I'll be getting from where we can download it. It's not mentioned. Go back to the top page and go back to the previous page. Let's go to the configuration basics. And here you can see that the quick configuration access key. And if we talk about the access key, then you can say creating a key pair, right? So creating a key pair will tell you from where actually we can download the key that is required to log in the CLI facility of the AWS. So you can see that to create an access key for an IAM user, you need to go on to the console page and log in with the IAM user. Under that navigation page, you need to click on choose users. And after that user, you need to go to the security credential tab. So let me go to the Yadvinder IAM profile. And here you can see that under that, I'm already logged in with the user of Yadvinder name. Okay, let me once again choose it. So I choose a Yadvinder user. Okay, and after that, I need to go to security credentials. I need to go to security credentials. So here you can see that under user, you need to choose one user. And after that, you need to go to the security credential tab. And in the access key section, choose create access key. So if I go to this particular page once again, you can see under the access keys section, you have create access key tab. But before going to click on this particular thing, I am going to explain you what are the access keys and what are their significances in the AWS CLI. Whenever we actually want to make programmatic call to AWS from the AWS command line interface, like or a PowerShell window, or software development kits, or direct AWS API calls, we can actually use this access keys. Okay, so the access keys for our protection, AWS never says that never share your secret keys with anyone. Okay, and as a best practice, we recommend frequent key rotation. Right, but the most important thing is that if you lose or forget your secret key, you cannot retrieve it back. Suppose the key that I will download and I delete this particular file, then I'll not be able to recover this particular access key pair, right? So if I actually want to use it, then I need to keep it safe with me so that anytime if the key is required, then I can use it from there only. Okay. तो और अगर आपकी की हो जाती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. You can also create a new access key anytime, and also you can make the old key inactive so that the security reasons
से हम लोग एक तरीके से उसके मिस यूज को बचा सकें। तो हम इमीडिएटली whenever we create a new access key, then we create or inactive the we make the other key inactive, or we can also delete the other key as well। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। Let me click to the create access key, and whenever I click on create access key, I'll be need to copy the particular ID, and after or I can download this particular file. So I'm clicking on the access key, and there you can see that the access key ID is created. And if you want to see the secret access key associated with this account ID, this access key ID, then you can click on show and you can copy it from here. Yeah? But it is saying that never post your secret access key on public platforms, because security aspect से अगर ये दोनों चीज किसी के पास भी हो, he can access the Yadvinder IAM role. What I'm going to do next is I'm going to download the CSV file just to keep a record in my system, because I'll not be able to get these keys to visualize these keys once again. So let me download the CSV file so that it will be available with my system. Let me see. Yes, you can see that the two columns are saying or showing that access key ID. This is the access key ID, and the secret access key is in the next column. Okay. Now I'm just clicking on don't save, and there I have downloaded it, and I cannot view it once again. So if I close this window, I'll not be able to get the access key for this particular user, because ये access key तो बन चुकी है, but I'll not be able to watch that once again. ठीक है, तो ये एक बहुत important चीज है। जब भी आप create access key करते हो, immediately you need to download it or you need to copy it, otherwise you will not be able to reuse it। ठीक है, क्योंकि आपको वो access key नहीं मिलेगी, इसकी आईडी के करस्पॉन्डिंग वो एक्सेस की आपको कभी भी नहीं मिलेगी अब। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा जनरेट करना चाहता हूँ, तो यू कैन क्रिएट अनदर की एंड यू कैन क्लिक ऑन मेक इनएक्टिव, और यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट फ्रॉम देयर। ठीक है, बट अगर आपने वो एक की डाउनलोड कर ली है, देन इस एक्सेस की आईडी के साथ साथ जो एक्सेस की थी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट आफ्टर आपने वो क्लोज कर दिया, उसके बाद आप नहीं इसको रिसीव कर सकते। ठीक है, सो आई एम गोइंग बैक टू दी हिंट वाले पेज पे चलते हैं। Now you can see that the two key pairs says that key ID and the secret access key. Now you have downloaded the CSV file and you can choose close if you want to keep that. Now with this particular file, what we can do is we actually can configure the AWS CLI. Under that particular thing, we need to type in the AWS access key ID, है ना। तो एक बार एक काम करते हैं, डाउनलोड्स पे चलते हैं और टाइप कर लेते हैं, there we go। ठीक है, ये मेरी एक्सेस की आईडी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी नीड टू टाइप इन हियर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेस की आईडी डालनी है। आई पेस्टेड इट हियर, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा इस आईडी के एसोसिएशन में आपका सीक्रेट एक्सेस की क्या है। ठीक है, और सीक्रेट एक्सेस की आप देख सकते हो पिछले वाले अकाउंट में ये सीक्रेट एक्सेस की मैंने डाली थी, अब इस वाले अकाउंट आईडी के साथ मुझे इसकी सीक्रेट एक्सेस की डालनी है। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, कॉपी द सीक्रेट एक्सेस की फ्रॉम देयर एंड यू कैन पेस्ट इट हियर। Let me copy it once again. And when I click on enter, then it asks me what is the region actually you want to choose. In the last class, I have chosen the AP South 1 region, that is Mumbai by default. But if you want to choose any region other than Mumbai or other than any particular region, you can choose. So you can type in like, let me click on the global. Yeah, you can, if you want to choose North Virginia region to deploy the services, so you can go to ES East 1. Or if you want to choose Mumbai, then you can choose AP South 1. If you want to choose Hyderabad, then you can choose AP South 2. If you want to choose Mumbai, then you can type in AP-Northeast-1. So you can choose any particular region that you actually want to use the services. So let me choose the North Virginia region for this particular account. So US East 1 मेरे को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा. So in this particular case,
AP dash what was that? US East one, right? So it's in US dash East dash 1. तो इस डिफॉल्ट रीजन नेम को अगर मैं यहाँ पर एक्स देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर मेरी कोई भी चीज डिप्लॉय होगी यूजिंग दिस पर्टिकुलर CLI कंसोल। ठीक है, इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट चेंज इट, आई कैन चेंज इट एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट, सो आई कैन चूज आउटपुट फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल विद मी। You can choose that. You can choose JSON, YML, YML stream, text or table. So just for the sake of convenience, let it be JSON. And now you can see that this particular AWS configuration is completed and I am out of this particular command. ठीक है, ये चारों ही configuration के लिए मैंने चारों inputs provide कर दिए हैं. Now if I actually want to use or to install, to launch a particular service, then I can go and choose. If I want to initiate the EC2 instances, then I can type in here और यहाँ पर मैं अब इसको run कर सकता हूँ. But whenever I enter this particular thing, describe the EC2 instances for me. So in this particular case, you can see that there is an error. The error says that you are not authorized to perform this operation. And why is this so? Can anybody tell me why it is showing you are not authorized to perform this operation? Why Yadvinder is not allowed to perform this operation? Anyone want to answer? Any random guesses from anyone? Yadvinder, बताना चाहोगे आप? What could be the answer? Are you listening to me? Just say yes or no. मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? Yeah, Manish is saying yes. Okay. So tell me, यादविंदर भी कह रहा है yes, प्रथम का भी रिप्लाई आ गया, वेरी गुड. तो आप मुझे बताओ फिर कि what could be the possibility that you are not authorized to perform this operation? Why is it so? रवीश भी कह रहा है कि हाँ सर आवाज आ रही है, वेरी गुड. So any one of you, ठीक है, why this particular command says you are not authorized to perform this operation? We have discussed this particular thing yesterday. Hopefully you remember कि authorized नहीं है. क्यों नहीं है authorized? It's not associated with this CLI facility. It is associated with the IAM user. Yeah, Manish Goyal is saying not launched EC2. मैं EC2 launch नहीं कर रहा हूँ. EC2 launch करने में वो you are not authorized है. क्यों है? Why I am not able to, why I am not authorized to perform this operation? The CLI suggests that you are not authorized to perform the operation. Why is that so? As a hint, it is related to IAM user role. IAM user के थ्रू आप इसको देख सकते हो, ठीक है. IAM user से related कोई ना कोई चीज है जो आपको unauthorized बना रही है. Yes, Aniket was right. Policies need to be defined. तो अभी एक्चुअल में क्या हुआ है, जब तक मैंने एक IAM यूजर यादविंदर नाम से बनाया, I have not attached any particular policy with the यादविंदर account. You can see that. अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो you can check the permissions and only two permissions are there. One is for the username change and the other one is IAM full access. I actually want to describe the EC2 instances and the policies that I have attached to this particular user is not having any EC2 instance policy.
So what I need to do next is I need to go and attach the policies for this particular user related to the EC2 instance की ये describe instance policy मेरे को associate या attach करनी पड़ेगी, ठीक है? So just click on add permissions. You can see that I am in the users and I have chosen the Yadvinder, ठीक है? Then go to the permissions. यहाँ पर आपको एक policy create करनी पड़ेगी. You can create a policy there. यहाँ पे आप policy पे create करोगे और policy पे click करने के बाद you can choose a service from there. You can search any particular service you are looking for. Suppose my EC2 की instance की बात कर रहा हूँ, just click on EC2. And there, if I actually want to allow full access, so I can click on this particular point, and you can see that all the access levels are attached with this particular thing. But it's not a best practice. The best practice is whatever thing I actually want to do with this particular account, I will allow only that. Okay. So let me go and select what are the things that I actually want to associate. So you can see that describe instance policy मेरे को देनी है, and you can see describe, है ना, they are alphabetically sorted. So you can go to D, E, F, G, H, I, describe images, instance, describe instances. So if I attach this particular policy to this user, unexpected error, okay, go to previous once again, describe instances, yes, and click on next review, and यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यादविंदर describe. Just for hint, I can type any particular policy name. So this is describe यादविंदर describe instances, ठीक है? मैं इस नाम से एक पॉलिसी बना रहा हूँ, यादविंदर में डाल रहा हूँ just for the hint, ठीक है? ये मैंने create कर दिया. Let's click on create policy, and there you will be able to see that after some time, yeah, the policy is created. This policy is created now, ठीक है? Just close this particular policy, and you can see that the यादविंदर describe policy है ना, और you can see the type is customer managed. ये customer ने खुद बनाई है, it's not AWS managed. These are policies are managed by the customers only, ठीक है? Just click on this particular, select this particular instance and go to actions, और यहाँ पर हम attach पे click करेंगे so that we can attach this particular policy to a particular user, ठीक है? यहाँ पर users list हो जाएंगे मेरे, और मेरे पास दो users आएंगे. एक user April 5 पंकज से मैंने बनाया था कल, एक यादविंदर नाम से बनाया है आज. I want to associate this particular policy to the Yadvinder user only. So click on Yadvinder and click on attach policy. Okay. Now it is attached. You can see that one entity was attached to the Yadvinder describe instance policy. Okay. Now if I do the same, use the same command on the CLI, then it won't show error. You can see that the describe instance task is performed, and here is no reservation under this particular thing, because describe instance we have not actually created any particular instances, so it is showing null in the data. Right now, the very next thing that we actually want to perform is we actually want to start the instances. So suppose मेरे को एक instance start करना है. This particular command says that AWS EC2 start instances, और यहाँ पर मुझे इंस्टेंस आईडी डालनी है, ठीक है? तो इंस्टेंस आईडी डालने के लिए मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा. सो लेट मी गो टू द यादविंदर प्रोफाइल, एंड देयर आई कैन गो टू द EC2 instances, and I can choose the US East 1 region. It is by default US East 1, ठीक है? Now what I need to do is I need to go to the EC2 instances. Okay, it's not opened yet. Reload the page, and I need to create an EC2 instance using the IAM user of Yadvinder. ठीक है? तो मैं it's not opening. Yes, here it is. ठीक है? So this page opens,
and I would like to, create an instance. Now it is saying that the API error is available in this particular section. Just click on create instance running, because I have not provided any, policy to this particular user to create the instance or launch the instance. So just try to launch the instance, whether I'll be able to do it or not. ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं suppose S1, or you can choose any particular server, but there you can see that AMI ID is no longer exist, because you may be associated with a specific account or any other region. Okay, because actually this particular thing is because I have not allowed Yadvinder to create the EC2 instances by himself. So let me create a policy. And go to choose a service, find the EC2 service, click on EC2. ठीक है, और यहाँ पर मैं इन सारी पॉलिसी में देखता हूँ कि मैं किस में स्टार्ट करता हूँ. राइट के अंदर स्टार्ट पॉलिसी होती है EC2 स्टार्ट. ठीक है, लेट मी गो टू दी स्टार्ट, अल्फाबेटिकली चलते हैं, एस नीचे आएगा. स्टार्ट इंस्टेंस, मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, स्टार्ट इंस्टेंस. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग वन वार्निंग. Let me go to what the warning is. Specify the R, anyone in this account tag, and create the policy. Suppose इस यादविंदर के नाम से, स्टार्ट इंस्टेंस के नाम से मैंने एक आईडी क्रिएट कर दी है. ठीक है, पॉलिसी क्रिएट कर दी है. So just click on create policy, and there you can see that the policy is created. And the very next thing that I need to do is I need to attach this particular policy to Yadvinder. So you can see that Yadvinder start instance के नाम से एक मैंने policy create करी है. Just click on that policy, go to actions once again and click on attach. तो यहाँ पर यादविंदर के नाम से जो यूजर है, मुझे उसके साथ इसको अटैच कर देना है. क्लिक ऑन अटैच पॉलिसी. ठीक है, नाउ इट इज डन. Now if I refresh this particular page, then I'll be able to create the instance in the name of Yadvinder. ठीक है, it's still not saying. There we go. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. S1 and then you can choose Windows for example. ठीक है, and let me choose the instance type. Error occurred loading the data. The problem might be because this AMI ID is still not valid in this particular case. Again यहाँ पर error आ रही है ना. तो अगर ये instance ID available नहीं है, तो obviously I'll not be able to create an instance. So this might be the error. So if I want to remove the error, then what I need to do is I need to apply the instances to this particular user. So for that, what I need to do is I need to click on create policy once again, and I need to choose a service that is EC2. Okay, and what I actually want to do with this particular EC2 instance is that I actually want to start, but for that, instead of using this particular service, what I can do is I can create the instance by myself. Let me go to my account. Yes, and choose a region that is in North Virginia. Okay, पहले EC2 पे चलते हैं. Go to EC2 and then select the North Virginia region.
I am in Mumbai by default. Let's go back to the North Virginia. ठीक है, और यहाँ पर मैं खुद से एक इंस्टेंस को स्टार्ट कर देता हूँ. Why I am saying this, I'll let you know after some time. ठीक है, इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक करते हैं, अभी कोई रनिंग में नहीं है. ठीक है, एंड दिस क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. मैं अपने रूट यूजर के नाम से एक सिस्टम इनिशियलाइज कर देता हूँ, है ना. विंडोज चूज कर लेते हैं सिस्टम में, एंड देयर यू कैन सी कि t2.micro बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है. सेलेक्ट द की पेयर. आप कोई भी चूज करना चाहते हो, सपोज केपी वर्जीनिया मेरे को चूज करनी है. ठीक है, and if you want to create a new security group, you can create one, otherwise you can choose existing security groups. So let me choose the existing security group. Okay, and I can click on launch instance. It is gone now. Okay, go to the instance once again, and there you can see the instance state is in pending state. So let's wait for 1 or 2 minutes so that this comes in the running, and the status check will be 2x2 status check passed आ जाए. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, सो इट्स शोइंग नाउ, इट इज रनिंग. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको, इसकी इंस्टेंस आईडी को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, और चूंकि ये रनिंग मोड में आ गया, एक बार हम इसका रिमोट और लेकर के देख लेते हैं. तो जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, आरडीपी क्लाइंट डाउनलोड करके वी कैन ट्राई टू कनेक्ट इट. ठीक है, यहाँ पर गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं. ओके, 4 मिनट हुए नहीं है अभी, सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट. आफ्टर 4 minutes are over, we will be able to generate the password for this particular system, और फिर हम उसको लॉग इन करेंगे. लॉग इन करके देखेंगे कि क्या वाकई में ये स्टार्ट हो गया. ठीक है, और अगर ये स्टार्ट हो गया है तो हम देखते हैं कि क्या ये यादविंद्र की प्रोफाइल में दिखा रहा है. whether is there any instance running. You can see that one instance is running. ठीक है, one instance is running. It is saying that, and you can see that under status check, you are not authorized to perform this operation because I have not granted the access to this particular user so that they cannot access this particular thing. ठीक है, but still ये instance चल रहा है, and you cannot actually click on this particular thing. You cannot terminate the instance, I think, but let me try after some time because एक experiment कर लें, उसके बाद देखते हैं. ठीक है, let's check whether it is connected. So go to connect, go to RDP client, click on get password, upload the private key. यहाँ पर मैंने चूज करा था KP वर्जीनिया, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी मॉर्निंग सेशन में. Click on decrypt password, copy this, open the remote desktop client, click on connect. Let me try to connect it once again. Okay, due to some technical reason, it might not be able to connect, but let me download the remote desktop file once again. Let's try it with this file also. No, it is not running.
Let's go back to the instance page once again. It is not connecting. Yeah, okay. So no problem. Go to the instance state, and what you need to do is you need to check whether it is in the running state. अभी ये initialize ही है. It's not in the status check. but एक काम करते हैं, इसको हम terminate कर देते हैं, और ये instance terminate नहीं करते हैं, basically इसको हम stop करते हैं. We actually stop the instance. ठीक है. So मैं इस instance को stop कर रहा हूँ, और ये ID मैंने already copy कर लिया है ना. एक copy कर लेता हूँ मैं यहाँ से instance ID copy, और इसको कर देता हूँ stop. ठीक है. Now this particular thing is saying that it is stopped. ठीक है. और अगर मैं इसको start करना चाहता हूँ using CLI with the name of obviously the यादविंदर, तो यहाँ पर we can try it. यहाँ पर हम उसको try कर सकते हैं. Instance ID copy करना भूल गया क्या मैं. ओके, एंड इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉप स्टेट में दिखा रहा है. ठीक है. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन सी दैट, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ऑब्वियसली मेरे को कमांड रन करानी पड़ेगी. दिस इज द कमांड, एंड वी नीड टू टाइप इन द कमांड. ठीक है. यहाँ पर मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी AWS EC2 start dash instances, फिर इंस्टेंस IDs, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा ID. ठीक है. तो ये कमांड मैंने एज इट इज लिख दी है, EC2 start instances instance ID, ये जो मैंने डाली है. ठीक है. और अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इट इज स्टार्टेड. ठीक. इट इज इन द पेंडिंग स्टेट करंटली, एंड प्रीवियस स्टेट मेरी है इट वाज स्टॉप. ये स्टॉप से मैंने स्टार्टिंग कर दी है ना. एंड अगर मैं अब इस इंस्टेंस पर जाऊंगा दोबारा, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यू कैन सी दैट इट कम्स इन द पेंडिंग स्टेट, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है. ठीक है. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस CLI फैसिलिटी, और इस CLI फैसिलिटी से मैंने स्टार्ट कर दिया है किसके अकाउंट से, यादविंदर के यूजर के अकाउंट से. लेकिन कौन सा रूट यूजर था जिसने ये क्रिएट करा था, ये क्रिएट करी थी पंकज भारद्वाज ने, और इसको स्टार्ट करा है किसने, यादविंदर ने. ठीक है. लेट्स वेट फॉर सम टाइम वेदर इट इज शोइंग इन द रनिंग स्टेट. या इट इज रनिंग स्टेट में आ गया. ठीक है. सिमिलरली अगर हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो हम स्टॉप करने के लिए स्टॉप कमांड यूज कर सकते हैं. यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, कर देंगे स्टॉप. ठीक है. लेट्स डू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AWS EC2 dash EC2 stop dash instances, फिर उसके बाद इंस्टेंस IDs, और यहाँ पर हम अपनी ID पेस्ट कर देंगे. अगर मैं अब ये स्टॉप करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि आपको एक एरर मिलेगी. क्यों मिलेगी? बिकॉज इट सेज दैट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. यादविंदर के नाम से जो IAM यूजर मैंने बनाया है, उसमें मैंने केवल और केवल स्टार्ट ऑपरेशन, स्टार्ट इंस्टेंस की ही कमांड को, इसको पॉलिसी को एक तरीके से IAM यूजर को प्रोवाइड करा है. आई हैव नॉट प्रोवाइडेड दी स्टॉप इंस्टेंस, यानी वो स्टॉप नहीं कर सकता. ठीक है. सो ये स्टार्ट तो कर सकता है, ने स्टार्ट तो कर दिया. ठीक है. बट ही कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप. सो इफ आई वांट टू अलाउ द पॉलिसी ऑफ स्टॉप एज वेल, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे IAM रोल में जाना पड़ेगा, और IAM रोल में जाने के बाद आई नीड टू क्रिएट अ पॉलिसी एंड चूज अ सर्विस. अगेन EC2 चूज कर लेते हैं. उसके बाद अंडर दैट राइट यू कैन हैव स्टॉप इंस्टेंसेस पॉलिसी. स्टार्ट इंस्टेंस यहाँ था, स्टॉप इंस्टेंस ये है. तो अगर मैं इस पॉलिसी को भी अप्लाई कर देता हूं, और यहाँ लिख देता हूँ पॉलिसी का नाम, यादविंदर स्टॉप इंस्टेंस. ठीक है. तो ये पॉलिसी अगर मैं क्रिएट करता हूं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, नाउ with this particular user I can
स्टार्ट द इंस्टेंस एज वेल एज आई कैन स्टॉप द इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट और स्टॉप दोनों कर सकता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पर स्टॉप करने की कोशिश करूंगा, एक बार देख लेते हैं कि ये रन हो गया, इट इज रनिंग। ठीक है, एक बार रिमोट पे लेके देखें इसको, देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, अभी रिमोट पे नहीं आ रहा है और स्टेटस चेक पास भी नहीं हुआ है। एनीवेज, बट विद दिस CLI फैसिलिटी वी हैव सीन कि हमने एक इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया। 2x2 स्टेटस चेक पास तो दिखा रहा है, बट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बड़ी ही अलग बात है। Let me connect once again. Maybe some technical issue is there. Anyways, but the thing is कि हमने एक इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया and it is running. ठीक है, now अगर मैं CLI के थ्रू इस इंस्टेंस को स्टॉप करना चाहता हूँ तो अब मैं इस इंस्टेंस को स्टॉप कर सकता हूँ ये वाली कमांड दोबारा रन करा के। यू कैन सी दैट जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, मैंने अभी स्टॉप इंस्टेंस, ओके मैंने अभी स्टॉप इंस्टेंस की क्रिएट करी है बट उसको ऑथराइज नहीं करा है। ओके, सो आई नीड टू गो टू द यादविंदर स्टॉप इंस्टेंस एंड आई नीड टू अटैच द पॉलिसी टू यादविंदर। तो क्लिक ऑन अटैच और यहाँ पर मैं यादविंदर के नाम से यूजर जो बनाया था उसको ये पॉलिसी ग्रांट कर दूंगा। ठीक है, क्लिक ऑन यादविंदर एंड अटैच पॉलिसी। तो ये देख सकते हो आप, ये अटैच हो गई है। और अब अगर मैं इंस्टेंस को क्लोज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, तो इस CLI के थ्रू I can basically stop the instance. There we go, right? You can see the current state saying code 64 and it is in the stopping state. Now the previous state क्या कहती है? Previous state कहती है code 16 में काम कर रहा था और इसका running नाम था, running से ये stopping state में चला गया। If I go to this particular page and I refresh it, you can see that no running state is instance is available. And if you see that, you can see that the instance state is stopped in this particular case. ठीक है, तो ये stop हो चुका है। यही सेम अगर मैं अपने main वाले से देखूंगा, root वाले से, तो भी आप देख सकते हो कि this state is saying stopped. So it is stopped. Now before leaving this particular thing, I need to go to the instance state क्योंकि ये stop हुआ है, terminate नहीं हुआ है, और जब तक terminate नहीं होगा it will be charged. ठीक है, तो इसको terminate करना पड़ेगा। So just click on terminate and it is successfully terminated. That's it. ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने एक यूजर आईडी क्रिएट करी, यूजर क्रिएट करा, बेसिकली IAM यूजर बनाया और उस IAM यूजर को CLI से एसोसिएट करा यूजिंग दी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। और वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हम दोबारा नहीं देख सकते। अगर आपको दोबारा देखने हैं तो आपको यूज करनी पड़ेगी एक्सेस की वाली फाइल, और वो फाइल है ये। ठीक है, where you can see that we have access key ID जो कि यादविंदर यूजर से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरी सीक्रेट एक्सेस की जो कि ये है। जब मैं CLI से एसोसिएट करूंगा, so I need to configure the CLI according to these details. So when I use the configuration AWS configure command, then I need to type in the access key ID and the secret access key for this particular user, and I need to choose a region, and I need to choose what type of default output that is showing in the JSON file or YAML or any kind of format you can choose. ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक CLI को कॉन्फ़िगर कर लिया अपने एक यूजर के लिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन में EC2 इंस्टेंसेस को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सीक्रेट एक्सेस की आपको हमेशा संभाल करके रखनी है अगर आप चाहते हो इसको रीयूज करना तो। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मुझे कोई हेल्प देखनी है देन आई कैन क्लिक ऑन AWS हेल्प और मैं कोई पर्टिकुलर चीज
के रिगार्डिंग हेल्प चाहता हूँ, सपोज आई वांट टू आस्क द हेल्प फॉर डीबग से रिलेटेड और एंड पॉइंट यूआरएल से रिलेटेड और नो वेरीफाई एसएसएल से रिलेटेड और एनी पर्टिकुलर थिंग, तो आप इस टाइप को देख सकते हो। मोर अगर आपको देखना है तो आप एंटर करते चले जाओ और आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सपोज S3 बकेट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एक S3 बकेट को स्टार्ट करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस, बट अगेन आपको उस यूजर को क्या बनाना पड़ेगा, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी उस S3 बकेट को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अगर S3 बकेट आप एक तरीके से CLI के थ्रू इनिशिएट करना चाहते हो तो यू कैन यूज द कमांड्स, ठीक है। बट सिंस Yadavinder IAM user is not able to get the access of S3 buckets, and that is why we can say that अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा AWS S3, तो ये पहली बात तो ये कह रहा है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है ना। लेकिन अगर मैं आगे कोई ARN बकेट दे भी देता हूँ तो वो कह देगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, क्योंकि मैंने अभी तक यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन दे देगा, क्योंकि मैंने S3 बकेट की कोई भी पॉलिसी इस IAM यूजर के साथ अटैच नहीं करी है, ठीक है। सो यू कैन डू n नंबर ऑफ टास्क, बट द ओनली थिंग दैट कैन मेक you access the limited resources is that if you are actually using it with the account provided by the university, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में we actually cannot use the AWS CLI. Now let me show you why I am saying this particular thing. तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको साइन आउट कर लेते हैं, but before signing out let me delete this particular user, ठीक है। तो जो मैंने यूजर बनाया है IAM पे जाके let me delete it. Best practice says that whatever role you are creating, whatever policies you are generating, you are not going to use it, then delete it immediately. So just click on and you can go to actions and delete. So this particular thing is saying that you have deleted this particular policy. Okay, now you can also delete these policies one by one. Because these policies are created just for the Yadavinder account, not for any other. Okay. And after that, you need to delete this particular policy as well. यहाँ पर हम Yadavinder describe instance policy को delete कर देते हैं। ऐसे ही मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने ये बनाई थी। Also, I'm going to delete the other policy as well. Okay. So they all are deleted. Now the next thing is that if I go to the users and if I click on Yadavinder, then you can see that I have no policy associated with this other than IAM full access, because IAM full access मैंने provide कर रखा है अभी भी, ठीक है। So if I click on the IAM full access and close it, then this will be deleted, ठीक है। तो ये एक्सेस यहाँ से मैं इससे वापस ले सकता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से you can delete the access from the user side as well as you can delete from the policy side as well, ठीक। तो जो पॉलिसी यहाँ नहीं है ऑलरेडी वो पॉलिसी इसके साथ नहीं एसोसिएट होगी, ठीक है। अब इसके पास केवल IAM यूजर चेंज का रोल रह गया है। तो इफ आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रोल एज वेल, आई कैन डिलीट इट। अदरवाइज मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, गो टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स ऑफ यादविंदर, देन यू विल बी एबल टू सी कि देयर इज वन एक्सेस की अवेलेबल with this particular user. Now if I want to make it inactive and deactivate, ठीक है, now you can see that this access key is deactivated.
it is showing in the status it is inactive. If you want to make it active once again, then you can make it active once again. अगर मैंने इसको deactive कर दिया है, तो let me go to the CMD once again, और मैं यहाँ पर कोई भी suppose AWS, क्या था, describe instance, let me, yeah, describe instances, C2 describe instances, इस पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा दिया इसने, describe instance operation was not able to validate the provided access credentials। आप देख सकते हो यहाँ पर उसने एरर दी कि इसको ऑथराइजेशन नहीं है, वाली एरर नहीं दिया, इसने दिया है AWS was not able to validate the provided access credentials। इसका मतलब जो इस CLI को मैंने कॉन्फ़िगर करा था यादविंदर के साथ, उसने इस AWS CLI ने उस क्रेडेंशियल को वेरीफाई नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने उस क्रेडेंशियल्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AWS कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जो भी मेरे पास एक्सेस की आईडी थी, है ना, ये आ चुकी है। बट ये आईडी वही है जो ये वाली है, यू कैन सी दैट 7CS, है ना, 7CS। बट these are these cannot be validated by the AWS because this ID is made inactive by me। तो अगर ये inactive हो गई है तो ऑटोमेटिकली I cannot reuse it। अगर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अगर अब मैं दोबारा से AWS EC2 describe instance करता हूँ तो यहाँ पर एरर कुछ और आ जाएगी, ठीक है, एरर आएगी कुछ और। देखते हैं कौन सी एरर आती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रही थी कि AWS was not able to validate the provided access credentials। क्यों? क्योंकि अब एक्सेस था ही नहीं उसके पास। लेकिन अब जब मैंने उसको एक्सेस को एक्टिव कर दिया है, तो यू कैन सी दैट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्योंकि अब डिस्क्राइब इंस्टेंस का पॉलिसी मैंने यादविंदर के नाम से हटा दी है, तो ऑटोमेटिकली ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? ऑलराइट, तो ये चीज क्लियर है आपको। अगर मैं कोई पॉलिसी डीएक्टिव करता हूं तो वहां पर आता है AWS was not able to validate, और अगर मैं पॉलिसी एक्टिव करता हूं और मैं पॉलिसी सॉरी इसका एक्सेस एक्टिव करता हूं, है ना, और पॉलिसी डिलीट कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता है यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक। सो जस्ट क्लिक ऑन मेक इनएक्टिव। You can also delete this particular access की ID as well। अदरवाइज चूंकि मैं इस यूजर को ही डिलीट करने जा रहा हूं, ठीक है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर यूजर और अगर मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर मुझे डिलीट। सो IAM यूजर जो मैंने क्रिएट करा था, दिस यूजर हैज बीन डिलीटेड। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, प्रोसेस क्लियर है कि अगर आप कैसे CLI के थ्रू किसी सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, कैसे एक्टिव कर सकते हो, कैसे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर या आई नीड नॉट टू आई थिंक आई नीड नॉट टू रिपीट वंस अगेन। अगर आपको क्लियर है जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस। तो मुनीश का रिप्लाई आ गया, उसको क्लियर है सब कुछ।